Yes, Abhinav. Sir, please don't log the meeting because if there is someone might be network issue due to which we disconnect the meeting, we will not be able to enter the meeting again. हेलो। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। सर, मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग को लॉक मत करिए क्योंकि अगर कई बार नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो लॉक होने की वजह से तो वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे तो इसलिए स्टूडेंट्स फिर जो अपनी मर्जी से, मैंने कई स्टूडेंट्स को नोटिस किया है, वो अपनी मर्जी। Okay, students. First of all, good afternoon to all. And our today topic is message authentication function. Okay, and this topic I already started in previous lecture, and in that lecture we have covered about message authentication requirements. Okay, then authentication function. Okay, we have total 3 authentication functions. The first is message encryption. Second is message authentication code, and third one is hash function. Okay, we have 3 types of message authentication. First is message encryption, that we already covered in the previous lecture, and next is a MAC, that is called message authentication code, and third one is hash function. Clear? So today I will start the second type, that is function authentication code. Function authentication code. Okay, so in function authentication code we have a function authentication code function C, that is called message authentication function. C, that is called message authentication function. We provide message with a key to this function. We provide message with key to this message authentication function, which gives us message authentication code, and this message authentication code act as a authenticator. This means this tells us that the message we received came from the genuine source. Clear? So this means in message authentication code we provide the message, we apply the message to the message authentication function with a key, common key. This key and this function used on both sides, on the in the sender side and on the receiver side. Function and key used on both the sides. So the concept is simple. What is the concept? We apply the message to function authentication message authentication function with a key which generates a message authentication code. And this code acts as a authenticator. Which authenticates that the message we are receiving came from the genuine source, or MAC is also called cryptographic checksum. MAC is also called cryptographic checksum. Okay, and इसको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है. ठीक है, that is cryptographic checksum. Clear? Here K is the key, M is the message, and C is the function. C is the MAC function. Okay, we provide message to the MAC function with a key which generates message authentication code, and it is also called cryptographic checksum.
Clear? So here we also have a number of scenarios where we can use MAC. ठीक है, MAC को जहां जहां पर यूज कर सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं. ओके, सो द फर्स्ट सिनेरियो इज MAC फॉर ऑथेंटिकेशन. MAC फॉर ऑथेंटिकेशन. MAC for authentication. The first scenario is MAC for authentication. Okay, here we have a message. We have a message and MAC function C with a key K key. We apply, suppose a sender A wants to send a message to the receiver. Firstly, what the sender will do? Sender will send message to the MAC function with a key K. It generates MAC, M-A-C, MAC, message authentication code. Message authentication code. The size of this code will be less as compared to this message. जो भी ये मैक फंक्शन कोड जनरेट करेगा ना, उसका साइज ये वाले मैसेज से क्या होगा, कम होगा. Now we merge MAC and message. MAC and message merge with each other. This is the append sign. This is called append sign. This means we append MAC with the message. Okay, and send, and what we get message and MAC code. Message and MAC. Okay, when we append message and MAC, what we will get? We get message and MAC. This is on the receiver sender side. Now on the other hand, on the receiver side, this message and MAC the receiver will receive, and the receiver take this message on the receiver side, apply this message to the MAC function again, see, okay, and what it generates? It generates MAC again, and we compare this MAC which is sent by the sender and this MAC which is generated by which is computed by the receiver. Compare these two MACs. If these two MACs are equal, so this means the message we receive is the authentic message. Okay, the simple है, A ने B को मैसेज सेंड करना है रिसीवर को, वो क्या करेगा, मैसेज पहले मैक फंक्शन को प्रोवाइड करेगा with a key K. Here we also have a key K, same key. तो जो मैक फंक्शन है, it generates MAC, MAC जो है उसको जनरेट करेगा. Now this MAC and this message we append with each other. हम उसको append कर देंगे, what we get? Message and MAC. Okay. Now on the receiver side, we take the message and send it to the MAC function again, to the C function with key K. It also generates a MAC on the receiver side. Now we compare this MAC which is computed by the receiver and this MAC which is computed by the sender. We compare these two MACs. If these two MACs are equal, this means our message is the authentic message. This means our message is the authentic message. इसका मतलब क्या है कि मैसेज जो है उसमें कोई जब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई इसको अल्टरेशन नहीं की गई हुई है. ठीक है ना. अगर ये दोनों मैक्स जो है वो सेम आ जाते हैं, देखो हमने मैसेज से ही मैक कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मैसेज से मैक कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियस है ये वाला मैक और ये वाला मैक जो है सेम होना चाहिए. इफ देयर इज नो अल्टरेशन इन द मैसेज ऑन द रिसीवर साइड. ओके, अगर तो रास्ते में मैसेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है, तो हमारा मैक जो वो क्या आएगा, सेम आएगा ये वाले मैक. So this means अगर तो these two MACs are equal, so this means our message is authentic message. Okay, but this scenario will not provide us
कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करती, इट ओनली प्रोवाइड्स अस ऑथेंटिसिटी, ये सिर्फ हमें क्या करता है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज आवर मैसेज इज नॉट इनक्रिप्टेड, so easily anybody, the hacker or and any person, C person can easily read the message and make any changes in the message. And how authentication it provides, because due to MAC act as a authenticator, also this will MAC ensure that the message came from the authentic person. So this scenario, MAC for authentication provides only authenticity and no confidentiality. Clear? Okay, so this is about MAC for authentication. And next is, बहुत easy है, इसमें कोई difficult नहीं है, just you have to remember these diagrams and then explain these diagrams. Okay, next second is MAC for authentication and confidentiality. MAC for authentication and confidentiality. MAC for authentication and confidentiality, and it is also of two types. The first type is authentication tied to plain text, and second is authentication tied to ciphertext. So here we firstly explain authentication tied to plain text. Authentication tied to plain text. Authentication tied to plain text. Okay, here we have a diagram for it. This is message, and this message goes to MAC function C with a key K1, and it will generate MAC, and this MAC appended with this message, and what we get? We get message and MAC. Okay, after appending we get message and MAC. Now this message and MAC, we encrypt this message and MAC. Now we encrypt this message and MAC with key K2, K. Here K1 key is used with MAC function, and K2 key is used for encryption of message, this merged message. Okay, now what we get? We get ciphertext. And this ciphertext is not easily broken by third party, or this message is not easily broken by a third person. Clear? Now this is our sender side. Now on the receiver side, what we get? We firstly decrypt our message with common key K2.
What we get? We get message and MAC. We get message and MAC. Okay. Now again, this message is provided to MAC function. See, with K1 key, and what we get MAC. Okay, we get MAC. Now compare this MAC with this MAC. Now compare this MAC with this MAC is from the sender side, and this MAC we computed on the receiver side. So we compare these two MACs. If these two MACs are equal, so this means our message came from the authentic person. Now here it also provides encryption. It also provides confidentiality, because we encrypt our message and decrypt on the receiver. So this scenario provides the both confidentiality and authenticity. Now again, I am repeating authentication tied to plain text. Here we have a message. If a sender A wants to send a message to sender B, how it send the message to the sender B? It first send the message to the MAC function, C, with a K key K1, and it generate this function generates MAC, MAC, and this MAC is appended with the message, original message, and what we get the message and MAC, and we get message and MAC. Now this message and MAC we encrypt with the encryption algorithm with K2 key, and it generates ciphertext. This ciphertext is not broken easily by the third party. Okay, because we encrypt our message with the encryption algorithm. Now, this is on the sender side. Okay, this is on sender side, and you have to explain this scenario. Okay, on the receiver side, what the B will do, we will take the ciphertext and decrypt it with K2 key, because we are using same key for encryption and decryption. We use K2 key for encryption and K2 key for decryption, and also we use K1 key for with the MAC function and K1 key with the MAC function. Okay, so on the receiver side, the receiver will decrypt the ciphertext with K2 key, and the output of ciphertext will be the output of the decryption will be message and MAC. Now again, we apply this message to the MAC function with K1 key, and this function will generate MAC. Okay, now compare this MAC which is computed on the receiver side with this MAC which is computed on the sender side. If both the MACs are equal, if both the MACs are equal, now our message is from the authentic message. Our message is the authentic message. Okay, it also provides authenticity and confidentiality. देखो authenticity कैसे? Because we are using MAC function which act as an authenticator that ensures that the message came from the genuine source. So in this way we can check our authenticity. And how the confidentiality we maintain? Because our message is encrypted with the encryption algorithm. So both the things, authenticity and confidentiality, maintained with this scenario. Okay, so if the case where we need the both things, authenticity and confidentiality, we can use this scenario. Okay, we can use this scenario, authentication tied to plain text. Clear?
Yes, students, any doubt? If you have any doubt, raise your hand. Otherwise, next start करूं फिर मैं. Yes, Anchal. सर जो हमने Yes. सिनेरियो किया है मैक फॉर ऑथेंटिकेशन, इसमें भी जब हम मैक फंक्शन में मैसेज पास करते हैं तो की प्रोवाइड करते हैं, तो जब रिसीवर साइड पे भी जब हम उसको अलग करेंगे तो की तो चाहिएगी, तो हाँ यहाँ बिल्कुल सेम की यूज होगी. तो सर फिर इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे नहीं आई, क्योंकि जिसके पास वो की होगी वही उसको ना 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 ना, ये की मैक फंक्शन और K1 की सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास ही होगी. और रिमेंबर वन थिंग, मैक फंक्शन और की कॉमन की जो यूज हो रही है दोनों साइड, ये सेंडर साइड भी होगी और रिसीवर साइड ही होगी. थर्ड पर्सन के पास ये की नहीं होगी. तो सर वही ना, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसको इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है? नहीं, इसमें तो कॉन्फिडेंशियलिटी है. सर नहीं, फर्स्ट वाले में जो था कि मैक फॉर ऑथेंटिकेशन अकेला, और उसमें देखो मैक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी नीड ए ऑथेंटिकेटर which ensure the authentications that the message came from the authentic person. यही बात मैंने बोली थी ना आपको. Yes, तो here we are using Mac as a authenticator. सर वो तो ठीक है, बट जब हम रिसीवर साइड पे उसको अलग करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो उस चीज के लिए भी तो हमें की चाहिए. तो हाँ, वो तो हमने ये देखो ना, मेरी बात सुनो अंचल, क्या है, देखो ये मैसेज है, मैसेज को मैक को भेजा K1 की के साथ. अब ये वाला फंक्शन और ये की जो है ना, ये इसके पास भी है और इसके पास भी है. क्योंकि Yes, यहाँ sir. पर हमने क्या करना है कि इस मैसेज को दोबारा से हमने कंप्यूट करवाना है. तो ये जो है ना, ये हमारा मैक फंक्शन जो ये आउटपुट दे रहा है, मैक फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, मैक दे रहा है. तो ये यही चीज हमारा ये क्या ऑथेंटिकेटर है. मैक क्या है, हमारा ऑथेंटिकेटर है. सर वो समझ आ गई है. मैं मतलब मेरा कहने का ये है कि वो की और किसी के पास तो प्रेजेंट होगी नहीं कि हाँ वो जी. अलग कर सके. तो हम लोग फर्स्ट केस में बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मैक फॉर ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, बट हाँ वहाँ जी. पर कॉन्फिडेंशियलिटी होगी क्योंकि अनऑथराइज्ड यूजर तो उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा. नहीं होगी आंसर. उसमें देखो वो उसमें क्या था, हमने मैसेज सीधा मर्ज किया था. ये देखो उसमें हमने क्या किया था, मैसेज और मैक. पिछले केस में बात कर रहा हूँ, मैसेज और मैक हमने क्या किया था, मर्ज किया था. ठीक है ना. Yes, sir. उसमें मैसेज को तो हमने कुछ नहीं किया, कोई इनक्रिप्शन लगाई थी उसके ऊपर, नहीं लगाई थी. फर्स्ट वाले केस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं. Yes, sir. वी जस्ट मर्ज दिस वैल्यू विद दिस मैसेज. Yes, sir. ठीक है ना. तो हमने इसको तो इनक्रिप्ट किया ही नहीं. तो इनक्रिप्ट नहीं किया तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट ही ट्रांसफर हो रहा है. Yes, ठीक है sir. ना. तो इसमें क्या है कि कोई भी बंदा इस मैसेज को पढ़ सकता है. ठीक है ना. इजीली कोई भी हैकर जो है वो इस मैसेज को इजीली पढ़ सकता है, क्योंकि हमने इसको तो मर्ज वो इनक्रिप्ट ही नहीं किया. बट हियर वी आर इनक्रिप्टिंग आवर मैसेज. ठीक है ये सर. देखो, इस मैसेज को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद इनक्रिप्शन एल्गोरिथम. तो Yes, जब इनक्रिप्ट हो गया तो विच जनरेट द साइफर टेक्स्ट. अब साइफर टेक्स्ट क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज चेंज हुई होती है, वो तो हम जानते ही नहीं है. इजिली वी कैन नॉट डिटरमिन दैट वैल्यूज. हमारा मैसेज क्या है वो तो हम इजिली कर नहीं सकते. प्रीवियस केस में हमने मैसेज जो था ना उसको एनक्रिप्ट नहीं किया था, वो सिंपल एज ए प्लेन टेक्स्ट ही ट्रांसफर हो रहा था. ओके सर. ठीक है. बट इस केस में हम अपने मैसेज को क्या कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं. यस सर. ठीक है ना. फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना. ओके सर. ठीक है. यस, कोई और भी था जिसने हैंड रेज किया था? लवप्रीत सिंह. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर लास्ट केस का ही पूछना था. हाँ उसमें जी. जब उसने अपने रिसीवर साइड के अंदर ये मैसेज को वापस वो मैक फंक्शन में पास किया था ना, हाँ जी. तो सर वहाँ पे अपने सिर्फ मैसेज को पास करते हैं, मैसेज प्लस मैक जो अपने ट्रांसफर किया उसको पूरे को पास करते हैं? पूरा नहीं, सिर्फ मैसेज. सिर्फ मैसेज ना. सिर्फ मैसेज. ओके सर. ठीक है. Yes. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके,
the next thing, next scenario of this next part, जो B part जो है इसका message MAC for authentication and confidentiality. The first part of this is authentication tied to plain text. Now authentication tied to ciphertext. Authentication tied to ciphertext. Authentication tied to ciphertext. Okay, here first पहले मैं डायग्राम ड्रा कर लूं फिर आपको मैं समझाता हूं. देखो, here we have a message. Before applying this message to the MAC function, we encrypt our message with K1 key. Firstly, we encrypt our message with K1 key and we get the ciphertext. Then we apply this ciphertext to the MAC function. That's why we called it authentication tied to ciphertext. Ciphertext का पहले हम मैसेज जो है उसको पहले ciphertext में कन्वर्ट करते हैं. Then we apply that message to the MAC function. Okay. Firstly, a message is encrypted with encryption algorithm with K1 key and we get ciphertext, and this ciphertext is provided to the MAC function with K2 key and we get the MAC. Okay, we get MAC. Now merge this MAC with the ciphertext. Now append this MAC with the ciphertext. We get ciphertext and MAC. Now this is on the sender side. On the receiver side, receiver will decrypt our message with K1 key, क्योंकि K1 के साथ वो क्या कर रहा है, encrypt कर रहा है, तो वो क्या करेगा, K1 के साथ इसको decrypt करेगा. So this is the form of symmetric encryption. Symmetric encryption में क्या होता था, we use same key on both sides. Okay, so we are encrypting our message with K1 key, and on the receiver side we are decrypting our message with the K1 key, and what we get message. Okay, we get the message and MAC. Now apply this ciphertext to the MAC function. Apply this ciphertext to the MAC function with K2 key, and we get MAC. देखो, on the sender side, we are providing this ciphertext to the MAC function and we get the MAC. The same procedure we are performing on the receiver side. We take the ciphertext, provide it to the MAC function with K2 key, and we get the MAC. Now we compare this MAC and this MAC.
which will be equal or not equal to. If both are equal, both MAC are equal, this MAC is from the sender side and this MAC is calculated on the receiver side. Okay, now we compare these two MACs. If these two MACs are equal, so this means our message is authentic. If both the MAC are not equal, so this means there is a problem in the message during the transmission. Okay, so if both the MACs are equal, this means our message is authentic. If both the MACs are not equal, this means our message is not authentic. So again, I am repeating. Firstly, a sender A has a message, this one message. Firstly, this message encrypted with encryption algorithm. Firstly, this message encrypted with encryption algorithm with K1 key, and we get the cipher text. Okay, we get the cipher text, and this cipher text we provide to the MAC function with K2 key, and the MAC function will generate MAC. Now, in the next step, this MAC and this cipher text we append with each other when we get the cipher and MAC. This is on the sender side. On the receiver side, the receiver will decrypt this message with K1 key and get the message, and the cipher text on the receiver side also cipher text provided to the MAC function with K2 key, and it will generate MAC. Now compare this MAC which is computed on receiver side with the MAC which is computed on the sender side. If both the MACs are equal, this means our message is from authentic source. Okay, it also provides confidentiality and authenticity because we are encrypting our message. And remember one thing, where we encrypt our message, so this means that provides us authenticity, confidentiality. That provides us confidentiality and authenticity. For authenticity, we have MAC. Clear? Okay. So this is the second type of the MAC authentication. This is the second type of MAC for authentication and confidentiality. Okay. So in the second type message authentication code, we have three scenarios. First scenario is MAC for authentication, which provides us only authenticity, not the confidentiality. Clear? Second, MAC for authentication and confidentiality. In this, we also have two cases. The first case, authentication tied to plain text. In that case, we provide the plain text to the MAC function, which generates the MAC code. Okay. Now, in the authentication tied to cipher text, firstly we convert our message. Firstly, we encrypt our message with the encryption algorithm with K1 key, and that generates the cipher text, and that cipher text we provide to the MAC function. Okay, that is authentication tied to cipher text. Clear? So this is the types of MAC. तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद करना. I am just here drawing this diagram. You have to explain all these points which I am explaining here. You have to explain all these points in the paper. Clear? I am drawing here the diagram. मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप लोगों को क्या करना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. जो जो मैंने आपको बताया समझाया वो सारा आपने उसको लिखना है. क्लियर? ठीक है. दिस इज अबाउट मैक. ओके, so now I'm going to launch poll 1.
Next is hash function. Third type of the function message authentication is hash function. Third type is the hash function. Third type is the hash function. Okay. First type is the message encryption. Second type is the message authentication code, and third type is the hash function. Okay. बहुत important है, इसको जरा ध्यान से करना है सभी ने. Clear? Okay. Now hash function is similar to MAC, but the only difference is in hash function we do not use key. In case of hash function we not use the key. Only the message provided to the hash function. Only the message provided to the hash function which generates hash code. Which is the fixed length code. And its size is less as compared to the original message. So this means in hash function, the message is applied to the hash function which generates the hash code. Hash code, capital H represents hash function, and whatever this generates, that is the H, is called hash code. It's called hash code and represented by small h. Capital H represents the hash function, and this hash function will take the message, plain message, okay, and will generate the hash code, and that is represented by small h. Okay, and hash function is also called compression function. Hash function is also called compression function. Note this point. Hash function is also called compression function because it compresses our message into the fixed size code, that is the hash code. ठीक है. Suppose हमारा जो मैसेज था ना, ओरिजिनल मैसेज, उसका साइज बड़ा था, तो जो हैश फंक्शन, जब मैसेज हैश फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल जनरेट द आउटपुट, जो भी इसकी आउटपुट आएगी उसका जो साइज होगा वो ओरिजिनल मैसेज से क्या होगा, कम होगा. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन फंक्शन. क्लियर? एंड this one, hash code is also called hash value or message digest. It is also called hash code, is also called hash value and message digest. Remember 3 points. Okay, hash function is also called compression function. Okay, and hash function is represented by capital H. Clear? And small h, that is called hash code, is also called hash value and message digest. Clear? And in hash function we simply apply message to the hash function and it generates hash code, that is H. और ये बात याद रखना. Clear? Okay, so here also we have different methods for authentication and confidentiality. Here we also have different methods for providing authentication and confidentiality.
and let's explain all these methods one by one. The first method, in the first method, here we also have different scenarios for representing the authentication and confidentiality. And in hash function, we have total 6 scenarios. We have total 6 methods, or you can say 6 scenarios, which provides us authenticity or confidentiality. different methods हैं जिनको आप different situations में use कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इसमें से जो first है वो हम चलो explain करते हैं कि first कौन सा है. So let's explain. Yes, here we have a message. Here we have a message, and this message is provided to hash function h. This message is provided to hash function h. And also remember one thing, with hash function we do not provide any key. Okay, we do not use key in hash function. We use key in MAC. Okay, but in hash function we do not use a key. We just apply this message to the hash function, and hash function will generate hash value, hash code, okay, whatever you want to say. And capital H represents the hash function which takes the message, which takes the original message and generates the hash value. Now merge hash value with the message, append, or you can say append. Now append message and hash value with each other, which generates message and hash value. Okay, which generates message and hash value. Now encrypt this value. Now encrypt this message with a key, K1. You can say key K1, and what we get ciphertext and hash value, and we get ciphertext and hash value which is not easily broken by the third party, or which is not easily broken by the attacker. Clear? Okay. This is on the sender side. This is on the sender side. This is on sender side. On the receiver side, the receiver will take this ciphertext and decrypt this message with the same key K1, and it generates a message M and hash value. It also generates a message. This ciphertext is converted. When decrypted, we get the original message. Now here again we apply hash function on this message and compare it with the hash value which is computed on the receiver side, and this hash value is computed on the sender side. Now compare both the hash values. If both the hash values are equal, so this means our message is from authentic side. If it is not equal, so this means our message is not authentic. Okay, here hash value is act as authenticator. Hash value act as authenticator. So the whole scenario I am repeating again. Now here we have a message. This message is passed to the hash function h, which generates the hash value, and this hash value
is merged with the original message, which generates message and hash value. Now this message is encrypted with encryption algorithm with K1 key. Okay, now we get the ciphertext and hash code. Now this is on the sender side. On the receiver side, this message is decrypted by the decryption with the K1 key, and what we get the message and hash value again. Now again we pass this message which we receive on the receiver side, pass this message to the hash function which generates the hash code. Now compare this hash code which is computed on the receiver side with the hash value which is computed on the sender side with each other. Okay, compare with each other. If both the hash code are equal, so this means our message is authentic. If both the hash values are not equal, this means our message is not authentic. Okay, so this provides authenticity and confidentiality. This provides both authenticity and confidentiality. Authenticity and confidentiality. Because how it provides authenticity and confidentiality? Authenticity means hash function, hash value, hash code act as an authenticator, which ensures that our messages are coming from the authentic source. Okay, now here we have encryption. We are using encryption by using symmetric key, because here we are using symmetric key because both the key that is on the sender side and on the receiver side are same. Okay, so here we are using symmetric key for the encryption purpose. Clear? So we encrypt our message. That ensures the encryption. That ensures the encryption of the message, that nobody can read our message. So this way, this scenario provides both the things. One is authentication, second is confidentiality. Clear? So this is about the first scenario of the hash function, जिसमें हमने क्या किया है कि we are using symmetric key for the encryption purpose and hash function for the authenticity. Clear? This is about our first scenario, or you can say first method. Easy है, कुछ भी नहीं है. मैसेज है, मैसेज को हैश फंक्शन को दिया, उसने हैश कोड जनरेट किया, दोनों को मर्ज कर दिया, फिर मैसेज और हैश कोड आ गया, इसको एनक्रिप्ट कर दिया बाय विद K1 key. We get the ciphertext. On the receiver side, we decrypt it, we get the message and hash function. Now again repeat this scenario and this situation here on the receiver side also. Now pass this message to the hash function, we get the hash code. Now compare the hash code which is computed on the receiver side with the hash code which is computed on the sender side. Okay, if both hash codes are equal, so this means our message is authentic, otherwise it is not authentic. So this scenario provides both authenticity and confidentiality. Okay, by using the symmetric key. Why symmetric key? Because the same key is used for the encryption purpose and decryption purpose. Yes, so this is the first scenario. ठीक है, next scenario, second. Yes, students, if you have any doubt, you can raise your hand. Yes, or you can message me. Clear? Yes, Aditya?
सर ये जो हैश फंक्शन है हम्म, इसने ओरिजिनल मैसेज को कंप्रेस कैसे किया है? वो देखो हैश फंक्शन जो है ना, उसकी जो वर्किंग है ना, उसमें जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो करता है अपना काम, ठीक है ना। ओके वो हम इतना वो ज़्यादा नहीं हम देख रहे कि हैश फंक्शन कैसे काम करता है, जस्ट वी आर यूजिंग हैश फंक्शन, ठीक है ना। ओके सर। हाँ जी। Okay, the next scenario, students, is we have a message, and this message passed to the hash function, and we get the hash code. Now here, the hash code we are encrypting. Hash code we are encrypting. We encrypt our hash code with key K1. With the key K1. Now this encrypted value. Now this encrypted hash code merged with the original message, or you can say append. Now what we get? We get a message and encrypted hash code. Encrypted hash code. Clear? Now this is on the receiver side. On the this is on the sender side. On the receiver side, again we pass, on the receiver side we pass this message to the hash function. Here also we are passing this message to the hash function on the sender side. On the receiver side, this message passed to the hash function, and it will generate hash code. It will generate hash code. Now we decrypt this hash code with K1 key, and what we get? We get the hash code. We get hash code. Now compare this hash code with this hash code which is computed on the receiver side, and the hash code which is computed on the sender side. Clear? We compare both the code equal or not equal. If both the hash codes are equal, this means our message is authentic. If both the hash codes are not equal, this means our message is not authentic. Okay, the scenario is very simple. Here we have a message that we want to send to the receiver. We just firstly we pass this message to the hash function which generates hash code. Now this hash code we encrypt with the K1 key. Now we have encrypted hash code. Now apply this encrypted hash code merged with the original message, and what we get? We get the message encrypted hash code. Okay. Now send this to the receiver. On the receiver side, this message again we pass to the hash function which generates the hash code. Now and here we decrypt our hash code with the decryption algorithm by using K1 key, and we get the hash code. Now compare this hash code which is computed on the sender side with the hash code which is computed on the receiver side. If both the codes are equal, so this means our message is authentic. If both the codes are not equal, this means our message is not authentic. Now tell me, this scenario what provide us? ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है ये? इन दोनों में क्या चीज प्रोवाइड करता है हमें ये सिनेरियो, ये वाला मेथड?
Yes, any student? Okay, this method or this scenario provides us only, आंचल का सुनी लो क्या कह रही है आंचल? Lovepreet Singh, authenticity. Yes, आंचल आपने हैंड रेज किया था. गगनदीप कौर, confidentiality. Lovepreet Singh, authenticity. Yes, anybody else? Confidentiality, authenticity. ध्यान से देखो. Maybe sir both. Very good. Amin? Manpreet Singh, confidentiality. ये ठीक है. अमीनदीप ने आंसर बहुत अच्छा दिया है. बोथ, मे बी बोथ. चलो ओके, देखो हियर वी हैव अ मैसेज. अब ये बताओ कि ऑन मैसेज वी आर डूइंग एनी इंक्रिप्शन? नो, वी आर जस्ट मर्ज दिस मैसेज विद द encrypted hash code. Here we are not performing any type of encryption on our message, on the original message. So this means this message we are sent as it is. We are just, देखो authenticity तो provide करनी है. क्यों? क्योंकि we have authentic code. We have authentic code. So this means it ensures the authenticity of our message. कि ये जो है इंटीग्रिटी और अथेंटिसिटी जो है वो तो इंश्योर करेगा ही करेगा, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस हैश फंक्शन इज दिस टू इंश्योर द अथेंटिसिटी. बट द थिंग इज कॉन्फिडेंशियलिटी. अगेन वी हैव अ मैसेज and we just this message merged with the encrypted hash code, and here we have plain message. We are not providing any type of encryption on this message. We are just sending our original message as it is to the receiver. So we are not encrypting this message. If we are not encrypting our message, we are sending it as we have, so anybody can read this message, okay, on the channel. So this means here we have no confidentiality, we have only authenticity. Authenticity तो होगी मैंने जैसे बताया. देखो इसका काम क्या है, हैश कोड, हैश फंक्शन, मैक कोड का काम क्या है? The both act as MAC, message authentication code, and hash code. इन दोनों का काम क्या है? authenticity प्रोवाइड कर. So this means this scenario only provide the authenticity, not the confidentiality, and we can use this where we are just providing authenticity, not confidentiality. मतलब कि यहाँ पर वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे. इस मैसेज को यूज कर सकते हो आप जहां पर सिर्फ आपको अथेंटिसिटी देनी है, और ये कोई मैटर नहीं रखती है कि हमने किसको मैसेज भेजना. पब्लिक और ओपन होगा फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल. ये क्या होगा, मैसेज ओपन होगा, तो उस वहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये वाला सिनेरियो यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो. नेक्स्ट थर्ड, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन दिस डायग्राम. डायग्राम याद है तो एक्सप्लेनेशन आप आराम से कर लोगे इनकी. ओके, so you have next poll. And you have 2 minutes for it. Okay students, next third scenario under the hash function is message
hash function, we get the hash code, then encrypt. Yes. So it is just जैसे हमने पिछला किया था ना वैसा ही है, but we have only one difference. What is the difference? Anybody else? What is the difference? What is the difference of this scenario with the previous scenario? Yes, Matesh. सर इसमें की यूज नहीं होगा। की यूज नहीं हुआ है। ओके। अंचल मित्तल। सर यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट और पब्लिक की यूज की है, एक ही। ओके ठीक है। देखो, the only difference is the key. Only difference is the difference is only key. In the previous scenario, we used symmetric key. We have used symmetric key. But here we are using asymmetric key. We are sending our message by using the asymmetric key here, and or you can say here we are encrypting the hash value with the asymmetric key. But in the previous case we are using symmetric key, because for encryption and decryption we have only one common key, but here we are encrypting our hash code with the private key of A, means A sender, B is the receiver. We are encrypting our hash value with the private key of A, and here ये आपको पता होना चाहिए, अगर हम किस मैसेज को A के साथ एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो वो उसको हम डिक्रिप्ट भी A की के साथ ही, पब्लिक की के साथ ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को अब तो याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट करता बाय यूजिंग बी पब्लिक की, तो उधर जाकर भी इसमें क्या होना था, डिक्रिप्ट होना था। सॉरी, अगर मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट करता बी की प्राइवेट की के साथ या पब्लिक की के साथ, तो वहां पर जाकर उसने क्या करना था, बी की ही की के साथ डिक्रिप्ट होना था, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सो here in this scenario we have a message, and we have to pass this message to the hash function which generates hash code. Now we are encrypting this hash code with the private key of A, and we have encrypted hash code. And merge this message with the encrypted hash code. Okay, this is on the sender side. On the receiver side, this message we send this message to the
receiver, and again this message is passed to the hash function which generates hash value, or hash code. Now decrypt this hash value which we have encrypted on the sender side with the public key of A. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A की प्राइवेट केस है उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी रिसीवर साइड हम क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं विद द पब्लिक की ऑफ A. ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो वी आर यूजिंग अ सिमेट्रिक की फॉर encrypting or decrypting the hash code, hash value. नो आगे तो वही है, मैसेज है, पास किया हैश फंक्शन which generates the hash code. We encrypt this message, this hash value with the private key of A. Then we have encrypted a hash value and append this hash value with the original message. We get the message and encrypted hash code. Now on the receiver side, this message is passed to the hash function which generates the hash value, and this encrypted hash code we decrypt it with the public key of A and we get the hash value. Okay, now compare this hash value which is computed on the sender side with the hash value which is computed on the receiver side with each other. If both the values are equal, this means our message is authentic. Okay, otherwise else our message is not authentic. Clear? The only difference is here we encrypting the hash code with the private key of A and decrypting our message with the decrypting the hash value with the public key of A. ठीक है, सिर्फ की का डिफरेंस है, बाकी सारा सिनेरियो सेम ही है. ठीक है, तो सिंपल है, इजी है. So here also the processing time is less. क्यों processing time कम होगा? Because we are not encrypting our original message. Previous case में भी क्या था, processing time कम था. क्यों? क्योंकि उसमें भी हम मैसेज को क्या कर रहे थे, encrypt नहीं कर रहे थे. इसलिए उस केस में भी क्या था, प्रीवियस केस था, उस केस में भी क्या था, प्रोसेसिंग टाइम कम था. ठीक है, इसमें भी प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा. क्यों कम लगेगा? क्योंकि वी आर नॉट एनक्रिप्टिंग आवर मैसेज. So it also provides us the only authenticity, not the confidentiality. Clear? तो बहुत इजी है ये. तो नेक्स्ट हम करते हैं इंक्रिप्शन. दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा वो. कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट सिनेरियो, और अथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट सिनेरियो. सो लेट्स सी फोर्थ scenario. Here we have a message. This message is passed to the hash function. ठीक है, we get the hash code and then encrypt this hash code with encryption algorithm by using private key of A. This is the A is the sender. Now merge this encrypted hash code with the original message. Okay, and what we get the message and encrypted hash code. Okay, we get the message and encrypted hash code. Now this value, message and encrypted hash code, provides to the encryption algorithm E by using a key
and we get ciphertext and encryption of hash code, encryption of hash code. ठीक है, देखो यहां पर भी इंक्रिप्टेड हैश कोड है, उसके ऊपर फिर से हमने इंक्रिप्शन कर दी तो डबल इंक्रिप्शन हो गई हैश कोड की, और मैसेज को भी हमने क्या कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिल गया, साइफर टेक्स्ट मिल गया। नाउ दिस इज ऑन द सेंडर साइड, this is on sender side. On the receiver side, provide this ciphertext and encrypted hash code to the receiver. Receiver will decrypt the message with the same key which is used for encryption the message. Clear? Okay, and we get message and encrypted hash code, message and encrypted hash code. Clear? And then decrypt this hash code with the public key of A, because we have decrypt the hash code with the private key of A, and on the other hand, on the other side, we will decrypt our hash code with the पब्लिक की ऑफ ए की पब्लिक की से ही उसको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अभी मैं सारा रिवाइज करता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा उसके साथ। ठीक है, देन दिस मैसेज पास टू द हैश फंक्शन विच जनरेट्स हैश कोड। नाउ कंपेयर बोथ द हैश कोड। देखो ध्यान से देखो क्या किया इसमें हमने दोनों चीजें अचीव की हैं। वी हैव अचीव्ड बोथ द थिंग्स, वन इज ऑथेंटिसिटी confidentiality. Okay, here we have a message. This message is provided to the hash function. 1 second students. हाँ जी, students, here we have a message and we provide this message to the hash function. Okay, hash function will generate the hash code and we encrypt this hash code with the private key of A. We get the encrypted hash code and after that we merge this encrypted hash code with the message and we get the message and encrypted hash code. Again we have
we are providing encryption on this message, message and encrypted hash code. Okay, we are providing encryption on this. We get the cipher text, message का तो cipher text बन जाएगा, and जो encrypted hash code है इसकी फिर से क्या हो जाएगी encryption. So we have double encryption for this hash code. So encryption hash code. ठीक है? This is on the receiver side, sorry, sender side, and on the receiver side we decrypt our message with the key. Here we are encrypting our message with the key K1, you can say key K1, and on the receiver side we are decrypting our message on the receiver side with the key 1 key. Here we are using same key for encryption and decryption, but for the encryption of the hash code we are using different key. We are using private key of A for the encryption of the hash code. On the other side, we are decrypting hash code with the public key of A. Okay. So for encrypting the message, we are using symmetric key. For encrypting or decrypting the hash code, we are using a symmetric key. Clear? So here we perform the encryption on the message. We get the cipher text and encryption of hash code. Okay, on the receiver side, on the other side, receiver side, the receiver will decrypt this message with K1 key, with the same key, okay, which is used for encryption, and we get the message and encrypted hash code. And again, we pass this message to the hash function and we get the hash code. And then this encrypted hash value decrypted with public key of A, and compare and we get the hash value. Now compare this hash value and this hash value with each other. Okay, if both the hash values are equal, this means this provides the authenticity. Now this encryption providing us confidentiality. ओके, और ये जो प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस हैश वैल्यू प्रोवाइडिंग अस ऑथेंटिसिटी एंड दिस इंक्रिप्शन प्रोवाइडिंग अस कॉन्फिडेंशियलिटी. क्लियर? सो विद दिस सिनेरियो वी कैन अचीव बोथ द थिंग्स, ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. क्लियर? कुछ भी नहीं है. मैसेज को पास किया हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन ने हैश कोड दिया, हैश कोड की इंक्रिप्शन की विद प्राइवेट की ऑफ ए, एंड देन मर्ज दिस encrypted hash code with the message. Okay, then encrypt this value with the key1 key, and we get the cipher text and encryption of hash code. And on the receiver side we decrypt our this message with the k1 key. ओके, सेम की जिससे हमने इनक्रिप्ट किया उसके साथ ही क्या कर रहे हैं, मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं. वी गेट द मैसेज एंड इनक्रिप्टेड हैश कोड, एंड नाउ अगेन प्रोवाइड दिस मैसेज, पास दिस मैसेज टू द हैश फंक्शन, एंड इट विल गिव अस हैश कोड. एंड अगेन दिस इनक्रिप्टेड हैश कोड पास टू द डिक्रिप्शन with the public key of A, which gives us the hash code. Now compare these two hash values. If both the hash values are equal, this means our message is authentic message. Okay, so in this way we can achieve both the things, authenticity and confidentiality. Clear? So this is the fourth scenario. Clear? Yes. Okay. Okay, now I'm going to next poll 3.
हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी करो। Okay, students, I'm going to end poll. Okay, the next scenario, fifth scenario. Here we are using a secret code. देखो ये जो हैश फंक्शन, सीक्रेट कोड, हैश फंक्शन की जो हमारी वैल्यू आती है ना, हैश कोड, और जहाँ फिर अब हम सीक्रेट कोड यूज करेंगे। ठीक है, ये किस पर्पस के लिए इनको इनक्रिप्ट, इसको क्यों इनक्रिप्ट करते हैं, हैश वैल्यू को क्यों इनक्रिप्ट करते हैं, हैश सीक्रेट कोड क्यों यूज कर रहे हैं? दिस इज यूज्ड फॉर द ऑथेंटिसिटी, कि हमारा जो ऑथेंटिकेटर है ना, ये वाले हमारे क्या है, ऑथेंटिकेटर है, ठीक है ना, इससे इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना, इसको क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि ये मतलब कि इसको कोई बंदा, इसको कोई चेंज ना कर सकेगी, मतलब कि ये हमें क्या करे, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड्स करें, कि हाँ भाई ये सही में जेन्युइन सोर्स से हमें मैसेज आ रहा है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। नाउ वी आर यूजिंग हियर अनदर थिंग दैट इज सीक्रेट कोड। कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट कोड होगा विच इज सीक्रेट बिटवीन द टू एंटिटी, विच इज सीक्रेट बिटवीन द टू एंटिटीज के बीच में ये क्या होगा, सीक्रेट होगा। तो सो दैट्स व्हाई वी हियर वी आर यूजिंग सीक्रेट की, सीक्रेट कोड। सो हियर वी हैव अ मैसेज and this message and secret code, कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट होगा विच इज सीक्रेट बिटवीन द बोथ द एंट्रीज, तो दोनों एंट्री सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई सीक्रेट कोड होगा। नाउ मैसेज एंड दिस सीक्रेट कोड append with each other, or you can say merge with each other. This merged value of message and secret code is provided to the hash function, and hash function generates hash code. It generates hash code. Now merge this message and this hash code value, we get message and hash code. ठीक है, and on the receiver side again we append secret code with the message. Clear?
and provide it to the hash code which generates hash value, and this hash code compare both the hash code. If they are equal, we have authentic message. If not equal, we have, so this means there are some problem in the message. So simple here. The fifth scenario, we have a message and a secret code which is known between both entity, sender and receiver. Now this message and this secret code merge with each other and provide to the hash function. After that, hash function will generate hash code. Now merge this message, original message, and this hash code with each other, and we get the message and hash code. On the receiver side, from this message and secret code, now repeat this procedure again. On the receiver side, this message and secret code merge with each other and provide to the hash code, and it generates the hash value. Now compare this hash value and this hash value with each other. If both the hash values becomes equal, so this means our message is authentic. देखो hash value, ये वाली hash value कहाँ calculate की थी हमने? Standard side के ऊपर, message से हमने calculate की थी. On the other hand, फिर हम क्या कर रहे हैं? Hash value calculate कर रहे हैं receiver side से. किससे? Message से. देखो in between अगर message में कहीं किसी third person ने गड़बड़ी कर दी, message हमारा alter कर दिया, तो ये हमारा hash code जो है ना, ये गलत आएगा, ये different आएगा ये वाले hash code से जो हमने standard side compute किया था. ठीक है? इसका मतलब क्या है? अगर ये वाला हैश कोड और ये वाला हैश कोड जो हमने रिसीवर साइड कंप्यूट किया, बोथ द हैश कोड्स आर डिफरेंट, दिस मींस देयर इज प्रॉब्लम इन द मैसेज. ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी ने थर्ड पार्टी ने हमारे मैसेज को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है. सो दैट्स व्हाई फॉर दिस रीजन आवर हैश कोड व्हिच वी कंप्यूट ऑन द रिसीवर साइड विल बी डिफरेंट विद द हैश कोड व्हिच इज कंप्यूटेड ऑन द सेंडर साइड. का मतलब हमारी ऑथेंटिसिटी नहीं रही, फिर हमारा क्या है? इंटीग्रिटी भी नहीं रही. मैसेज इंटीग्रिटी भी नहीं रहेगी, ऑथेंटिसिटी भी नहीं रहेगी हमारी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो वैसे नहीं है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि मैसेज सिंपल मैसेज, हम प्लेन टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कंप्यूट हैश कोड अगेन इन ऑन द रिसीवर साइड आल्सो. ठीक है? सो this message with secret code merge with each other, provide to the hash function which generate a hash code. Now merge this hash code with original message and we get the message and hash code. On the receiver end, this message and secret code merged with each other and provide to the hash function which generates the hash code. Now compare this hash value and this hash value with each other. If both the hash values are equal, this means our message is from the authentic source. If both the if both the hash values are not equal, so this means there is a problem in the message. ठीक है? So in this way, this is our fifth scenario, and we have last scenario, that is sixth scenario. जल्दी कर लेते हैं उसको भी, और ये टॉपिक जो है फिनिश करते हैं. ओके, तब तक मैं आपको लास्ट पोल जो है वो लॉन्च कर रहा हूं, और आप वो कर लो. तब तक मैं डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेता हूं.
ओके स्टूडेंट्स, हो गया, डन। हरी अप, जल्दी करो, मैं अब एंड कर रहा हूँ। ओके, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि हमें ऑथेंटिकेशन भी मिलेगी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी। ओके, हियर वी हैव अ मैसेज, merge this message and secret code with each other and pass it to the hash value, hash function which generates hash value, and then append this hash value with the original message and we get the message and hash code. Now encrypt this message with the K1 key and we get the cipher text and hash value. Now on the receiver end, we decrypt our message and we get the message and hash value. Now decrypt it with the K1 key. Same key से हम क्या कर रहे हैं, उसको encrypt और decrypt कर रहे हैं. Now here this message and secret key again merge with each other and pass it to the hash function h and we get the hash value again, and this hash value, compare these two values, both are equal. Our message is from the authentic source. If these are not equal, this means our message is not from the authentic source. अब क्या है इसमें, क्या हमें authenticity भी मिल रही है. Now we have authenticity कहाँ से मिल रही है, hash वैल्यू से, ठीक है. confidentiality encryption से. This message cannot be break easily by anyone. So here we achieve both authenticity and confidentiality. दोनों चीजें हम अचीव कर रहे हैं. Simple message, merge original message with the secret key and then pass the merged message to the hash function. We get the hash value. Now merge this hash value with the original message and we get the message and hash value. Now encrypt this with the encryption algorithm with K1 key. We get the cipher text. Now this is on the sender side. Now on the receiver side, decrypt this message with the K1 key. Same key, symmetric key हो गई हमारी, means decrypt किया K1 key से. Okay, and we get the message and hash function. Now again repeat this procedure here again on the receiver end. This message and secret key merged with each other and pass it to the hash function. What we get the hash value. Now compare newly computed hash value on the receiver side with the hash value which is computed on the sender side. If both the hash values are equal, this means our message is from the authentic source. If both the values are not equal, this means our message is there is a problem in the message. There is a alteration in the message by the third person. Okay, this is about hash function. Here we have total 6 scenarios. सारे के सारे भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जहाँ इनमें से कोई पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है जो आपको ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करे और कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करे, वो वाला सिनेरियो बताओ बाय यूजिंग हैश फंक्शन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर हैश फंक्शन. सो हियर वी हैव टोटल 3 हैश फंक्शंस, सॉरी मैसेज encrypt, we have total 3 authentication functions. First authentication is message encryption
second is MAC, message authentication code, and last one is the hash function. Clear? So if you have any doubt, you can ask me. Yes, any student? Yes, students.